Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 46 of that topic, some basic principles and techniques of the organic chemistry. Now we have started the study of reaction mechanism part or fundamental things which are required to learn the reaction mechanism, okay, and that is very important part from this topic. In that we have to see first the types of bond breaking, or they call the types of fission. Fission means to break, of covalent bond. So there are two types there. That one is called as the heterolytic fission, and other is known as, or heterolytic cleavage also it is called. Heterolytic cleavage, and the other we shall learn later on, that is homolytic cleavage. Or that is also called as the homolytic fission. Okay, that we shall learn. But let us learn first the heterolytic cleavage or heterolytic fission. Now the name itself is indicative. You know earlier that how a covalent bond is formed between two atoms. समझो that carbon and halogen is there. Then you know that one electron is shared by carbon, other is shared by the halogen, and that's why the bond is formed there. Okay. चलो दोनों भी बॉन्ड हम डॉट से बताते हैं. ए दोनों भी इलेक्ट्रॉन. Let us one electron is of carbon and one is of halogen. Now this type of the bond is called the shared pair. This is called as what? Shared pair of electrons. Okay, in that C-X bond, which is called as covalent bond. So you know earlier how a covalent bond is formed. A covalent bond is formed by sharing of one unpaired electron each by two atoms. Now the shared pair of electron should remain equidistant from two atoms, and both the bonded atoms will have equal kind of the that right on that shared pair. ये जैसा हम देखते हैं बिजनेस में, इक्वल कैपिटल देने के बाद दो पार्टनर्स जुड़ जाते हैं, एक बिजनेस चालू कर देते हैं. समझो 20 लाख का उसका कैपिटल है तो 10 लाख रुपीस एक पार्टनर ने दिए हैं, 10 लाख दूसरे ने दिए हैं, तो एक कॉमन बिजनेस बन जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, उससे प्रॉफिट लॉसेस इक्वल में शेयर किए जाते हैं, लाइक दैट. सो दिस इज एग्जैक्टली सेम कोवलेंट बॉन्ड. पर जब जमता नहीं है उन दोनों पार्टनर्स में तो बॉन्ड ब्रेक भी हो जाता है. हम देखते हैं पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, कहते हैं उसे पार्टनरशिप ब्रेक हो गई. कभी कभी वो समझदारी से होती है, कभी कभी धोखाधड़ी से होती है. सो वन एंड द सेम. तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे. ये हेटेरोलिटिक जो है ये थोड़ा धोखाधड़ी का मामला है, और होमोलिटिक जो है वो समझदारी का मामला है, सिंपल लैंग्वेज में. नाउ इन हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, particularly the breaking of bond occurs in such a way that both the electrons of shared pair will be carried only by one fragment and the other fragment will not be getting any electron. चलो सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं ए और बी में ऐसा बॉन्ड. ओके, ए और बी में ये कोवलेंट बॉन्ड है. Now when the bond is to be broken there, that both the electrons of shared pair will be taken by only B. So B will be getting that lone pair of electrons there, one electron in XIth, that's why B will get minus charge and A will get plus charge. Now why these charges are formed, that you can better understand. क्यों charges ऐसे बन गए हैं बता सकते हैं? Why the charges are formed there? Because of the unequal distribution. अब जब देने वाले थे इलेक्ट्रॉन तो दोनों ने एक एक दिया था, but while breaking the bond there, both the electrons of shared pair have been taken by only one fragment. The other is not getting anything. Instead it has lost. ये जो दो इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये A का था, ये B का था, पर दोनों भी B ने निकाल के लिए है, बिकॉज B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन बाय B. तो B को वो इलेक्ट्रॉन पेयर मिलने की वजह से, एंड सिंस B हैज गॉट इट्स ओन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज वन इलेक्ट्रॉन इन एडिशन, B विल गेट नेगेटिव चार्ज. ये इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाने की जरूरत नहीं है हम.
पर बी आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा आने की वजह से वहां पे नेगेटिव चार्ज आया. ओके, एंड ए हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन इन द पार्टनरशिप, यानी ए का कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज. ओके, and thus heterotic fission always results in the formation of ions. यहाँ पे हीट करने के बाद भी ऐसा हो सकता है. और ऐसी कुछ जरूरी नहीं है. समझो ए और बी में, सपोज दैट ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, देन बोथ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी टेकन बाय ए. उन दोनों में से जो बदमाश होगा वो ले लेगा इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? व्हाट विल हैपन हियर? ए विल बी गेटिंग नेगेटिव चार्ज एंड बी विल बी गेटिंग पॉजिटिव चार्ज बिकॉज बी हैज लॉस्ट. ओके, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ए को मिल गया. सच टाइप ऑफ द आयंस विल बी फॉर्म. सो ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है एवरी टाइम दैट बी शुड गेट नेगेटिव चार्ज. ए को भी मिल सकता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो. पर यहां पे हेट्रो का मतलब जान गए. हेट्रो मीन्स डिसिमिलर, अनइक्वल. हियर द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड हैज ऑकर्ड इन unequal manner. Both the electrons are carried by one electron, one atom only, one fragment only. The other is not getting it. That's why it is called heterotic fission. And the heterotic cleavage always results into the ions, one positive, one negative. अब यहाँ पे हम देखेंगे पर्टिकुलरली एग्जाम्पल के साथ हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सपोज दैट आई एम टेकिंग CH3Br और CH3X. मिथाइल ब्रोमाइड लिया तो भी चलेगा. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस देयर व्हेन वी टेक मिथाइल ब्रोमाइड? बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, Br is more electronegative than carbon, both the electrons will be taken by Br. So obviously Br will be getting minus charge and CH3 will be getting plus charge. CH3 is getting positive charge and Br is getting negative charge. Okay, so Br has got octet of electrons. Octet of electrons with lone pair of electrons. Okay, एक pair of electrons भी उसे मिल जाएगा. एंड CH3 को क्या मिलेगा? कार्बोनियम. इसे कहते हैं कार्ब कैटायन. पहले उसे कार्बोनियम आयन कहते थे हमारे जमाने में. नाउ द वर्ड इज चेंज. इट इज स्टिल कॉल्ड एज कार्बोनियम, नो डाउट, but more correctly by IUPAC it is suggested that it is called as the carbocation या carbocation. Okay, तो यहाँ पे कार्बन हैज sextet of electron. The one fragment which is having electrons lost in that process will have sextet. जिसका इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है वो सेक्सटेट तैयार कर देगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा मिल गया है वो ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन बना देगा. यानी आयंस तो बन गए, एक नेगेटिव आयन, एक पॉजिटिव आयन. पर ऐसा जरूरी नहीं है. कभी कभी देखो कैसा होता है. जैसा हम देखते हैं कार्बन अगर Z से जुड़ा है, CH3Z, and Z is here इलेक्ट्रोपॉजिटिव. वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है. यहाँ पे Br कैसा था? Br इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसको इलेक्ट्रॉन का आकर्षण ज्यादा था. ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन को धिक्कारता है. एंड इन दैट केस व्हेन द बॉन्ड ब्रेक्स, then both the electrons will get transferred to the carbon. Now carbon will get octet of electrons, and carbon will be having one electron pair in XIth. It will be having minus charge and Z will be having plus charge. Okay, तो ये जो कार्बन निगेटिव चार्ज वाला बना है इसे कहते हैं कार्ब एनियन या कार्बेनियन. Carbanion ion is formed there. Okay, so by heterotic fission, when carbon takes both the electron from the covalent bond, carbanion ion is formed where carbon has got negative charge. And when
the covalent bond breaks between the carbon and more electronegative halogen, then both the electrons are taken by that more electronegative halogen and carbon loses the electron. So carbon will get positive charge, that we call as carbocation. जो कैटायन होता है उसे सेक्सटेट होता है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन. सेक्सटेट का मतलब क्या है, यहाँ पे सेक्स का संबंध नहीं है यहाँ पे बायोलॉजी के, यहाँ पे उसका मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन. ओके, सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन. और ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब तो आपको मालूम है 8 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सेक्सटेट यानी 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो आई होप यू आर गेटिंग इट. वेरी वेरी सिंपल. हेटेरोलिटिक फ्यूजन. So whenever heterotic fission occurs during the chemical reaction, it is called the ionic reaction or polar reaction. Okay, ions are formed. Therefore, such reactions in which heterotic fission occurs is called as the ionic reaction or polar reaction. क्योंकि दो पोल बन जाते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. So do like and share this video to your friends. In the next lecture, we shall meet again with that details of that heterotic fission with the help of geometry. Okay, so thanks a lot.